Mr. Bhupendra Chaube, ADG Mr. Mayank Agarwal, Professor Hemant Joshi, and dear students. I welcome you all to this orientation session. Today is the last day of the orientation program, and I'm sure this particular week was very enriching for all of you. Today we have with us Mr. Bhupendra Chaube as our guest. And in fact, as a faculty of new media, as a teacher of new media, I'm following him on Periscope. And whenever I look at my cell phone, every time I get this notification that Mr. Bhupendra Chaube is live. So, welcome, sir. And we have a very special way of welcoming our guest. For this, I would like to request our Director General to present. Thank you very much, sir. Now, listening to someone's biodata is very important. It's equally inspiring and motivating. And for this, I would like to invite our DG to introduce Mr. Bhupendra Chaube formally to us and for the welcome address. Namaskar and a very good morning to all of you. And a very warm welcome to one of the most familiar, popular faces on Indian television today, Mr. Bhupendra Chaube. Bhupendra has been one of the finest political journalists of our times. Over the last 2 decades, he has brought stories of political crisis, change and devastation to our homes. Having started his career with NDTV, Bhupendra teamed up with some of the finest TV professionals to launch CNN IBN, which quickly rose to become India's favorite channel for the big stories and in-depth insights. He has made a mark for himself for having a keen eye to project the micro detail on a macro canvas. At present, he is the executive editor of CNN IBN, now known as CNN News 18. He is the host of India's most innovative show, Big 5 at 10, which is a daily news show. In addition, he also hosts a very popular interview show named The Hot Seat. I'm really proud to introduce Bhupen, as we have been friends for over 2 decades, and we have covered several beats together. We have traveled even to Pakistan, Bhupen, and a couple of things I have noticed over, the last 2 decades. Bhupen is a totally dedicated person, and his growth in media has been a phenomenon. Even today, many of his contemporaries continue to be, reporters. He has grown to be the executive editor of his channel, and without any godfather. And that is a real recognition of his competence, his capability, and above all, I found him that even as he grew in his profession, he always remained a very humble person. I have never seen success get into his head. He is today a celebrity. He is mobbed by people whenever he goes, wherever. But even in the midst of that crowd, he recognizes his friends. And, he accepted our invitation at a very short notice. And I know that not only for me, but also for IMC, Bhupen Chaube is just a call away. Thank you, Bhupen. As I said that I'm following him on Periscope. Usually what happens that till 11:30, he is on his show. And morning when I get up at 6 o'clock and 6:30, I saw him live on Periscope also. So this is the amount of hard work he puts into. And now I would like to invite him to interact with our students. So. Good afternoon, depending on who is woken up when. Thanks very much, KG, for inviting me here. I think there was no need to give such a long-winded introduction about me. I would have been happier if Suresh would have just described me as his friend, because that's what he really is to me. A very close friend. And as he rightly described us, that we go back a long way, having covered many stories, many beats, a lot of exciting details, which sometimes he would break, sometimes I would break, or sometimes someone else would break. But yes, we go back a long way. Thank you very much, Anubhuti, for being on Periscope with me.
So just to set the record straight, yes, I do my Periscope till 11:30 and I wake up at 6:30 or 7 because my daughter has to go to school. So I have to drop her to the bus stop, and when I'm going to the bus, when I'm actually coming back from the bus stop, I just like to just flip through my Twitter timeline and my Facebook timeline and just figure out what is it that people have been hyperventilating about, through the evening, through the night, while all of us were asleep. Because frankly, what has happened today is that journalism and media has all become about outrage. It has become about hyperventilating. Who outrages how much? Which publication, which channel, which website can provide you with more ammunition to scream, with more ammunition to feel angry. So I just, on my short walk, 5-7 minutes back, I just like to flip around just to see, so this, okay, so now I figured out, okay, this is what is agitating the minds of the Twitterati, the social media community. So all of you, I understand this is the last day of the orientation, and all of you have had the privilege and the pleasure of interacting with some of the leading lights of Indian media and Indian journalism. So let me just tell you about me, who I really am, how have I come to this position where I am today, and what do I really do. So let me actually begin with a lovely story which dates back many years back, when I started off with NDTV in 1998. So in NDTV, in those days, television was not what it is today. There were not so many channels, pressures were far lesser, and one could really think in terms of picking up a book on a lovely weekday evening and reading that book for 70-80 pages, which is impossible today. It's a luxury. It's almost as if that you've been transported into a different world, into a different time zone. So we used to do a shift called the night shift. Now the night shift was a very interesting shift. The night shift would begin at the stroke of midnight hour, and it would go on till 8 AM the next morning. So the job of the night shift reporter was to ensure that next day in the morning, when the anchors and the news staff would come into the newsroom, there is a full bulletin which is ready, what we now describe as breakfast news. So when I started off, I would be put on these 2-week shifts. So every 2 months you do 2 weeks of night shift, which is 12 to 8. So my body clock and everything was going. It's like working in a call center. Like many of you may have friends in the call centers, and you must be seeing all these people who go and everyone thinks, wow, what a great life. So my mother one day asked me very humbly. Nobody from my family had ever been a journalist, had ever ventured anywhere near media. So she said, "Beta, ek baat batao, tum karte kya hote?" So I looked at her and I said, "Mom, why are you asking me?" She says, "No, look at this person's son, he's an engineer, he goes in the morning, he comes back in the evening, he's with his parents, and I see that, you have this, I don't know what this profession is about, you are gone through the night." Then she very modestly, she asked me, "I hope you're not doing drugs." So I said, no, don't worry, I'm not doing drugs. I'm a journalist. So she said, "But, तुमको किस चीज़ की कमी है? तुमको पैसे की कमी है क्या? I hope तुमने जाके कहीं तुम रात में नौकरी तो नहीं कर रहे हो." She actually thought that I was working as a security guard. So I came back to my office, and Rajdeep Sardesai, who used to be my editor in those days. So I told him, I said, look, this is what my mother thinks about me, that I'm working as a security guard. Not that I'm saying there's anything wrong in working as a security guard. So he laughed. And he says, "My friend, you've conquered the first tenet in a sense of journalism, because nobody in this country knows what a journalist is really doing. So don't expect your poor mother to know that." So one started off from that kind of a background, and one is today where one is doing daily programs, and slowly I'm seeing that my responsibilities are now slowly pushing me again towards that stroke of midnight business. I just hope that I never have to once again look at my watch and say that, "Oh God, it's midnight and I'm still here in the office." So that's my brief introduction in terms of where I started and how I started. I didn't go to any media institute.
And I genuinely believe that these days the kind of infrastructure which exists, whether it's in IMC and a whole host of other institutes across the country, is a fantastic opportunity for all of you young minds to really equip yourselves with tools, with factors which will keep you in good stead when you actually enter the profession. Because one thing which I really miss, as much as I would like to do that, I unfortunately do not spend enough time grooming individuals. Because my responsibilities today are so far and so much and so wide that I don't get a chance to interact with young minds. Which is why when Suresh first asked me, and he called me and he said, would you like to come? And I thought that this is the opportunity which I don't want to miss, because I would love to hear from you all. You know, I'd love to hear from you all, your challenges, what do you make out of the media, what do you think of journalism, why, what is it that attracts you about this profession, and hopefully as we go along, over the next half an hour or so, we'll be able to, you know, have a constructive exchange of thoughts, because as much as you would like to listen to me, trust me, I also want to listen to you. I also want to hear from you, what is it that brings you to this profession. According to me, there is absolutely no profession like journalism. The kind of people I have interacted with, the kind of moments that I've had in my life. I mean, KG and I were a part of the infamous trip of L.K. Advani when he went to Pakistan way back in 2005. And the sheer thrill of reporting on a trip which became a global lead story was something which I don't think any one of us, I mean, I don't know about KG, I don't think that I can put that thrill down in words. You have to be there. You know, and when you're there, it's like a rush of adrenaline. When the 26/11 terror strikes happened in 2008 in Mumbai, incidentally on the 26th itself, I was scheduled to do a program which was to run from 9:30 to 10:30 p.m., which was a live program. And nobody had any clue, you know, nobody knew what was to come. And I distinctly remember, and I can never forget that, at 10:15, just when I was thinking, I was in a break, a commercial break, and I was about to call my wife and say, okay, fine, I'm about to come back home, you know, maybe we'll watch a movie at home. So I was beginning to make my plans for the evening. At 10:15, my producer told me in my ear, so you wear an earpiece when you're in the studio so that the producer can talk to you. My producer told me, you know what, sir, there has been some report of some shooting somewhere in Mumbai. Must be some mad guy, maybe, you know, somebody's pulled the trigger or something. So I said, yeah, you know, I mean, I said, just check if there's maybe some gang war, maybe, you know, someone has just decided to pull the trigger. He says, yeah, maybe we should ignore it. I said, yeah, sure. I mean, just see if it's not too big, forget it. 10:15 at night. 10 minutes down the line, at 10:25, just when I was about to give my concluding lines on the camera and say goodbye, good night, sleep well, sleep tight, and I'll see you guys again tomorrow, we suddenly, I just saw in front of me, I just saw on the screen itself, because the producer obviously decided to go straight live to those pictures, and I saw shots of, you know, these live gunshots which were being exchanged. And one of the cameramen actually got hit in Mumbai. I just saw those pictures and I froze. And I realized suddenly that, you know, I was grossly underestimating the importance of what was happening in front of me. And the rest, as I say, is history. I ended up, along with another colleague of mine, being in the studio that whole night, the next whole day, the next whole night. So we held forth all of 24 hours, and I kid you not for a second did I feel tired. Not for a second did I feel that, you know, that what's going on? I need a breakfast break, I need a coffee break, tea break, whatever. I mean, I don't know when did I take a loo break, frankly. You know, so those are the reason why I'm sharing these experiences with you is because that is the only way you will manage to keep yourself alive in this profession, which is also becoming a business, right? So when KG called me, we were discussing what topics we should talk about. So I gave him a few thoughts, and then we zeroed in that we should maybe look at media, journalism, and business. So the reason why I have started off with all these, with all these brighter sides to the profession and the adventure, the thrill, and I can keep giving you several instances if you'd like, and maybe maybe all of us will be here till the evening.
But that's the reason why I have managed to keep myself alive as a journalist while there have been all kinds of pressures which are bound to be exerted on anyone. It's a business, and make absolutely no mistake, no qualms about it. It's good that you have a teacher like Anubhuti who is teaching you new media. So I'm sure many of you are on Twitter, many of you are on Facebook, on Snapchat, and there are a whole bunch of platforms which are available. Who thinks highly of journalists? Look at the kind of narratives which have been created about journalists. Right? On Diwali, I'll give another anecdote. On Diwali, a couple of years back, I was at someone's house, and there was this big box which came to this fellow journalist's house as well, which was a gift from someone. Now, as a matter of principle, I do not accept any Diwali gifts other than sweets. And over the years, everyone around the country and Delhi has kind of gotten to know this. Now, in that big box, I do not know what was in the big box, but there were at least 10-15 people in front of whom that box was delivered. Now, the box was delivered, and it was straight away, it was taken straight inside the room. It didn't really catch my attention, but it did catch the attention of some of the others who were present in the room. And immediately I saw that the conversation then on was about, hey, what's in that box? This box, the size of this box. My God, it's such a huge box. What is it? Is it a TV? Is it a briefcase? Is it, surely it was not a shelf of books. So it was something else. Now the person in whose house that box was delivered saw what was going on. And to tell you the truth, the guy felt visibly embarrassed that he had accepted that present was delivered in his house before that entire group. Now, if you were to correlate that with the kind of narration, with the kind of description which is often made of journalists, you would figure out that there are some serious dilemmas, ethical challenges which also exist. The reason why those dilemmas and ethical challenges exist is because media, at the end of the day, while it has to discharge responsibilities, it also has to be a commercially viable organization. I cannot be the editor of CNN IBM, and I cannot run this channel if my revenues are not there. Now, how do I make those revenues? I'm not going to sell my soul. I'm not going to sell my content. I have to therefore create a scenario where my journalism and my content is catchy enough, is informative enough to ensure that you all, when you all are watching that content, you are gripped by that content. That's why I said, and I began by saying that you need to have a rush of adrenaline, you need to be excited, you need to be passionate about what you do, and that's the only way, the only manner in which you will keep yourself alive as a journalist. शायद आप में से कुछ लोग हिंदी भाषी होंगे, मुझे बताया गया कि काफ़ी लोग यहाँ पे हिंदी पत्रकारिता और उर्दू पत्रकारिता से भी हैं। एक मैं जो अपने स्वयं के ऊपर मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ वो ये कि मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही बड़े अच्छे तरीके से मैं बातचीत करता हूँ। और हमारे 2 चैनल्स हैं, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, और मैं खुद बनारस में हूँ, प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ, तो वो बड़ी अच्छी बात है। तो मेरे हिंदी के मित्रों के लिए और हमारे उर्दू के साथियों के लिए, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो मैं खाली उसके सारांश अगर मैं आपको समझा दूं, मैं तो सारांश में सिर्फ इतना ही कह रहा हूं मैं कि बहुत उम्दा प्रोफेशन में आप लोग प्रवेश करने वाले हैं, कर ही चुके हैं मेरे मुताबिक। अगर आप लोग IMC जैसी जगह में बहुत टफ कंपटीशन होता है, करीबन 2-3 साल पहले मैं एक बार इंटरव्यू बोर्ड पे बैठा था और मैं देख के वाकई हैरान रह गया था कि कितने अलग अलग विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न पृष्ठभूमियों से जहाँ से लोग आते हैं और अपने मस्तिष्क में क्या क्या ख्याल, क्या क्या सोच रख के आते हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। तो आप सब लोगों को मेरी ओर से ढेरों बधाई कि आप सब लोग IMC में आप लोगों पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो आप सबसे भी मेरी गुजारिश यही है कि आप लोग अपने आप को मजबूत बनाएं, पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। मैं पूरे देश में अलग अलग जगहों पे मुझे भाषण देने के लिए जब भी बुलाया जाता है तो मैं सबसे सिर्फ और सिर्फ एक ही गुजारिश करता हूँ कि कृपया करके पढ़ने की आदत जरूर डालें। कहीं भी पढ़ें, डिजिटल पे पढ़ें, मोबाइल पे पढ़ें, किताब में पढ़ें, अखबार में पढ़ें, लेकिन पढ़िए, क्योंकि साहब अगर पढ़िएगा नहीं आप तो क्या है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
भारत का हम लोग अभी 70वां हम लोग अभी स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। आज मैं आ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि हम लोग हर साल स्वतंत्रता दिवस पे बड़ी प्रोग्रामिंग होती है, अनेकों चीजें करते हैं। 70 साल, 30 साल बाद 100 साल, तो आप सोचिए कि भारत जब 100 साल का होगा, स्वतंत्र भारत का इतिहास 100 साल का होगा, तो भारत कहां होगा? क्या आज से किसी ने 5 साल चलिए 10 साल पहले, क्या किसी ने 2004 में सोचा था कि एक समय आएगा जब हम लोग व्हाट्सएप पे और ट्विटर के जरिए एजेंडा सेट होंगे, ओपिनियंस बनेंगे? मैंने तो नहीं सोचा था कम से कम 2000। मैं अपना खुद का उदाहरण दे रहा हूं। मेरी रुचि कह रही थी कि मैं बहुत बड़ा प्रैक्टिशनर हूं डिजिटल मीडिया का, जो कि मैं हूं, लेकिन मैं भी बहुत समय तक डिजिटल मीडिया की जो इंपॉर्टेंस है मैं उसको समझ नहीं पाया था। और मुझे भी ये लगता है क्या है ट्विटर, मोबाइल, कौन देखता है? हम टीवी स्टार हैं, हमें आदमी टीवी पे देखेगा, मोबाइल पे देखेगा। लेकिन समय बदलता है, चक्र घूमता है। तो जब चक्र घूमता है तो वही आदमी उस चक्र में सफलता पाता है जो आदमी सबसे सटीक, सबसे ताकतवर हो। और ताकत आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से आएगी और कहीं से नहीं आएगी। तो वो ज्ञान जो है वो चाहे आपके टीचर्स आपको देते हैं, चाहे आपको खुद उसको अर्जित करिए, लेकिन ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी है। और जब आपको मौका मिलता है तो उसे जरूर करें। तो पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, वही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और अंत में आप लोगों से सिर्फ यही कहूंगा कि हम सबके इर्द गिर्द बहुत सी बातें कही जाती हैं। मैंने अभी जो बॉक्स वाला एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया कि एक आदमी उसको शायद एम्बैरेसमेंट हुई होगी थोड़ी, उसको ये क्या हो गया मेरे साथ। तो हर तालाब में गंदी मछलियां भी हैं, अच्छी मछलियां भी हैं। आपको यह देखना है कि जो ग्लास है वो आधा खाली है या आधा पूरा है। मैं अपने जीवन में मैंने हमेशा से एक सकारात्मक सोच रखी, एक ऑप्टिमिस्टिक सोच रखी है। जो कुछ मेरे इर्द गिर्द होता है वो होता है, मुझे पता है, उसका मुझे ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान से मुझे प्रेरित होने के बजाय यह सोचना है कि मैं अपने जीवन में यह कैसे इंश्योर करूं कि मैं इन भ्रांतियों से इंपैक्ट न हो, उनका असर मेरे ऊपर न पड़े। यह मुझे सोचना है और यही चीज आप सबको भी सोचनी चाहिए। अब आप लोगों का अगर कोई सवाल हो कुछ मेरे बारे में या हमारे काम के बारे में, तो आप लोग खुल के पूछ सकते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि आज कई दिनों से हमारे दोस्तों ने सवाल किया कि एक सहाफ़ी जब वो मैदानी सहाफ़त में आता है तो फिर वो अपनी सारी सोच बदल देता है जो तालिब इल्मी के ज़माने में सोचता है, मसलन करप्शन नहीं करूँगा और सारी चीज़ें। तो सर मेरा सवाल ये है कि एक ज़मीनी सतह का इंसान, मतलब सहाफ़ी जिसकी सैलरी 15,000 या 10,000 होती है, तो क्या वो अपनी ज़िंदगी इस सैलरी में गुजार सकता है? अगर नहीं गुजार सकता है सर, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई मीडिया सेक्टर हो जो उसकी सैलरी को आइडेंटिफाई करेगा और उसकी सैलरी को इत्मीनान बख्श देगा? उस वक्त मैं बड़ी खुशी से मैंने वो सैलरी ली थी। देखिए क्या है, और मैं बड़ी कैंडिडली बात करता हूँ मैं इस मुद्दे पे खास तौर से। पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि साहब आप करते क्या हैं, आप क्या बनाते हैं? अगर आप एक इंजीनियर होते तो आप कहीं केमिकल बना रहे होते, आप कपड़ा बेच रहे होते, आप एमबीए होते तो आप शायद कोई पदार्थ बेच रहे होते, कुछ प्रोडक्ट आप सेल कर रहे होते या कुछ प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे होते। वो दिखता है कि आपने कुर्ता बनाया, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, खाना बनाया, क्या बनाया। पत्रकारिता इकलौता ऐसा बिजनेस है, कोई मुझसे पूछे मैं क्या बनाता हूं, मैं बातें बनाता हूं। अब मुझे बातें बनाने के लिए मुझे कोई क्यों सैलरी देगा, मुझे बताइए। या मुझसे कोई कहे कि साहब ऐसा है, आप मुझको सैलरी दीजिए और मैं ना आपको सुबह से लेकर रात तक मैं आपको बातें बताता हूं। सोचने की बात है। अब वहीं पे जो विरोधाभास है वहीं पे आता है कि आप इस प्रोफेशन में पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि अगर पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं तो मैं पहले ही स्टेज पे आपको कह देता हूं कि आप निराश हो जाएंगे। पैसा आप कमा सकते हैं, मेरी कहना नहीं कमा सकते, लेकिन उसके लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कुछ समय पहले मैंने कहा कि कोई प्रोफेशन इस दुनिया में, देश में, इस दुनिया में मैं कह रहा हूं, इस दुनिया में कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहां पर जिस प्रकार के अनुभव आपको इस प्रोफेशन में मिलेंगे वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये आप मुझसे लिखवा लीजिए, स्टैम्प पेपर पर लिखवा लीजिए। तो
तो आप पैसा भले शुरू में ना बना पाए, लेकिन आप अनुभव जरूर बनाएंगे। अब उन अनुभवों के बेसिस पे आप अपने करियर को, अपने जीवन को कहां लेके जाते हैं, वो आपके ऊपर है। इसलिए ये कहना है कि आप एक यूनिफॉर्म बैंड होना चाहिए। मजीठिया बोर्ड है, वेज बोर्ड है, लेकिन उस बोर्ड में भी मैं आपको बताऊं 15,000 रुपए मिनिमम सैलरी निर्धारित नहीं की गई थी, जिसका आपने भी जिक्र किया था। मेरा सवाल बहुत छोटा सा है कि सर आज का समाज जो टीवी से बहुत ही प्रभावित हो रहा है, एक मतलब न्यूज़ से वो एक समाज की छवि तैयार करता है, तो ऐसे में क्या टीवी न्यूज़ चैनल्स को अपनी टीआरपी के लिए किसी भी हद तक जाना कितना सही है, और टीआरपी की रेस में क्या प्योर न्यूज़ को छोड़ देना या उसकी अनदेखी करना कितना सही है? One of my teachers advised me कि you are going to the best institute of mass communication, you will have all the facilities and a good faculty. So try to have command on economic beats, because in coming time in near future, India as well as world is going to have a great economic change. So the industry requires journalists for economic beat, especially we talk about Hindi journalism. So there are only a few numbers of journalists for this thing. So how much is this true? Sir, my second question is, I have heard that a few people said to me that with the widespread popularity of social media and growing citizen journalism, in near future, in next few 10 years, maybe there will be nothing like hardcore journalism left. So sir, what are your views on social media or citizen journalism affecting journalism, hardcore journalism as a career? So the questions that you asked her, were you told to ask those questions or they were your own? Stars, everyone, nobody ever tells me what questions to be asked. I decide on my own. I must admit that कि जैसे आप इंग्लिश जर्नलिज्म में देखें, आप उर्दू जर्नलिज्म में, तो तलफ़ुज़ या जो प्रोनाउंसिएशन है वो शुद्ध होता है, लेकिन अगर हिंदी पत्रकारिता की बात करते हैं तो उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ बहुत होती हैं। शा को सा बोलते हैं, जा को जा बोलते हैं, और गा को गा, इस तरीके से। उससे मैं प्राइम टाइम में भी रीडिंग जर्नलिस्ट, न्यूज़ एंकर्स, प्रिंट में तो सही लिखा जाता है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप देखें, रेडियो में भी कई बार, लेकिन वो टीवी में ज़्यादातर ये चीज़ देखने में कि वो गलत बोलते हैं, वो मतलब सही से उच्चारण समझ। दूसरा मेरा सवाल ये है कि हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में मौलिक कार्य की बहुत कमी है। वो कहीं ना कहीं इंग्लिश जर्नलिज्म से ट्रांसलेशन वर्क ज़्यादा होता है, अनुवाद करके किया जाता है। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि मुझे इंग्लिश जर्नलिज्म और उर्दू सहाफ़त के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन मैं हिंदी पत्रकारिता में जहाँ देखता हूँ वो मुझे ऐसा लगता है शायद कि भाई भतीजा बात है, तो प्रतिभाशाली जो लोग हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए उनको, जिससे कि कुछ इस तरीके के लोग हैं उनके कंटेंट पे कमांड कितनी भी हो, उनको कुछ भी आता हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन ही जब सही नहीं है तो वो सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं शायद। और दूसरी चीज़ इसी में मैं जोड़ना चाहूँगा कि कुछ जैसे लफ्ज़ ऐसे शब्द होते हैं, लोकोक्ति या मुहावरे, कि वो बस एक धर्रा बनाया हुआ है। आज इंडिया पाका में 4 को रौंद, उसने उसको रौंदा, मतलब एक शब्दावली जो है जो परंपरागत रूप से पहले से चली आ रही है, उसी को फॉलो किया जा रहा है। कुछ मतलब अलग से कुछ यूनिक वर्क देखने को नहीं मिलता है। धन्यवाद। मैं नहीं बता पाता विभिन्न कारणों से। एक जो हमारे पत्रकारिता वर्ग में जो एक भ्रांति है वो ये है कि हम लोग ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। अभी डायरेक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे विभिन्न देशों से कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे डेवलपमेंट जर्नलिज्म के लिए। सो पीपल हु कम फ्रॉम अदर कंट्रीज अदर देन इंडिया फॉर अ कोर्स इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म, इट्स गुड, यू नो, वी वुड लाइक इट। हम लोग खुद भी चाहेंगे दैट people from our own fraternity also are subjected to some kind of domestic training modules. जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, हम लोग अपने यहाँ से ऑक्सफोर्ड में आ चुके, हमारा CNN से टाइप है, तो हम लोग हर साल रेगुलरली हम लोग कुछ पत्रकारों को भेजते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ ट्रेनिंग के लिए। मैं भी उन ट्रेनिंग प्रोग्राम से गया, उससे काफ़ी मदद मिलती है। मुझे लगता है कि हिंदी के क्षेत्र में भी मे बी देयर इज एन आइडिया देयर, सुरेश, इफ यू ऑल थिंक, यू नो, मे बी आइडेंटिफाई maybe 10 journalists, you know, active journalists with 5 to 7 years of experience, and get them to your institute and let it be a midterm course correction. Since Sark's speech was blacked out, so is it true that Pakistan's private news channels were barred from telecasting his speech? And my second question is, there is a tension between traditional journalism and online journalism. UK's The Independent had ceased its print edition.
So do you believe that in India, there is a long decline in print readership? So do you believe that print will become dead in a few years' time? Actually, that's wrong. It will increase. It's the viewership which is going down. मीडिया की भाषा इतनी जजमेंटल हो गई है, इतनी निर्णायक हो गई है कि हम किसी भी निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए आजकल चरमपंथ और लड़ाका ऐसे शब्दों की बजाय हम आतंकवाद का प्रयोग कर देते हैं, बल्कि आतंकवाद वो है जिसे किसी देश और काल के स्वरूप के साथ बदलता रहता है। जैसे आज जो नेपाल के पीएम है प्रचंड जी, उनको कई हलकों में आतंकवादी माना जाता है। तो ये किस संपादकीय नीति के तहत है? क्या हमारी संपादकीय नीति में कमी है? और आजकल सो कॉल्ड जैसे शब्द तो गायब ही हो गए सर, इसकी क्या वजह है? मेरा काम ये नहीं है कि मैं अपनी ओपिनियन आपके ऊपर थोपूं। मेरा काम ये है कि मैं आपको इतना सशक्त कर पाऊं कि आप अपनी ओपिनियन खुद बना पाए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो डिफरेंस कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन में जरूर आ गया है कि हम लोग अपनी ओपिनियन आपके ऊपर थोपते हैं। रही बात भाषा की, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, वो सब इसीलिए तो क्या महसूस कराना चाहता हूँ, मैं आपको क्या अनुभूति कराना चाहता हूँ सब, और इसी समस्या से कहीं ना कहीं ये जो आपने कहा, जो कि गलत है मेरे मुताबिक, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन है आप लोग अभी युवा हैं, अभी आप लोग प्रोफेशन में नहीं आए हैं, आप लोग जिस हद तक अपने आप को इस भ्रांति से दूर रख सकते हैं उतना अच्छा है, उतना अच्छा इस प्रोफेशन के लिए, उतना अच्छा आप लोगों के लिए है। मेरा मानना है कि अगर हम लोग सदैव अपने खुद के अंदर झांक के ये देखें और अपने आप से अगर ये पूछें कि हम लोग जो कर रहे हैं, हमारी भाषा, हमारा काम, क्या हम खुद उससे संतुष्ट हैं? अगर हम खुद उससे संतुष्ट हैं, अगर हम खुद अपनी ही नजरों में कोई गलत काम नहीं कर रहे जो हम नहीं करना चाहते, तो मेरे मुताबिक कहीं ना कहीं पत्रकारिता का भी फायदा होगा। I have two questions for you. First one is that who are the main sponsors of the private televisions in India, especially the news TV? I'm asking these questions because in Mongolia we have very small markets for the media. We have only 3 million people, so only politicians and also very big businessmen have money. So we get sponsored from them. So in return we have to stay silent in some kind of events for the favor. So have to be independent in this kind of business world. And this is my first question. Second one is, you are now running CNN TV. You know, you're doing CNN practice in India. So our company is also CNN affiliate. So we get some training from CNN. And the biggest challenge we encounter now is the young and senior journalists. We have clash, very big clash, because senior journalists are mainly educated in Russia and they are very traditional way when it comes to reporting. But young journalists like me, we watch the Western media, CNN, BBC, something like Al Jazeera and like so on. So we learn from them. So we have misunderstanding when it comes to reporting. So do you encounter this kind of problem in your company, CNN News 18? So like young generation and old generation. So how do you solve this problem? Thank you. मीडिया का राजनीतिकरण और मीडिया का व्यवसायीकरण हो चुका है। इसके चलते प्रिंट मीडिया के अंदर कई बार देखा जाता है कि विज्ञापन विभाग है और जो संपादन विभाग है उसमें आपस में क्लैश हो जाता है, तो कहीं ना कहीं संपादन विभाग को समझौता करना पड़ता है। और दूसरी तरफ हम बात करें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की या टीवी मीडिया की, तो सर हम अभी हाल ही में हमारे देश के कई राज्यों में सूखा पड़ा, जिसके चलते मराठवाड़ा में हजारों किसानों ने आत्महत्या की। और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हमारी जो सरकार है वो हरकत में आई और उसको सूखा पीड़ित घोषित किया गया। सर ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार की नाकामयाबी के साथ साथ हमारी मीडिया की भी नाकामयाबी है। तो सर इन सबको सुधार करने के लिए कोई नियम बनाए जा रहे हैं या क्या नियम बनाए जाने चाहिए सर, उसके बारे में बताएं कुछ। एक बड़े एक्सपीरियंस है आपको, करीब 20 साल हो गए पत्रकारिता में जी। सर कोई तो ऐसी चीज होगी जो आपके भी समझ नहीं आई आज तक, वो आप शेयर करना चाहेंगे? सर पत्रकारिता में कोई तो ऐसा इशू, कोई ऐसी बात होगी जो आपके भी समझ नहीं आई आज तक, वो शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? ये अभी उन्होंने सवाल जो पूछा था, मैं last question. And media have become a major platform for outrage, then news dissemination. So don't you think that journalists and the media houses who are controlling the entire media industry, they are somewhere responsible in doing so?
So rather than carrying out the social responsibility, they are more interested in garnering numbers. So don't you think it's part of the corporatized media scenario? I did ask that question when somebody else raised that point. Being an outrage industry, but is it being done purely to promote corporate agendas? No. Is it being done to generate TRPs? Yes. And I have already do a propaganda machine. Then we are doing disservice to our profession. But there are all the platforms, is there on Periscope, Twitter, Facebook, you can catch him there. And I would like to thank you, and especially like for sharing that one question which these students might come across very often, he said in his speech कि हम बातें बनाते हैं. But now you guys have to look for your answer. That was his answer. So thank you very much, sir. ये रस्म निभानी होती है, तो धन्यवाद भी देना होता है। मैं धन्यवाद कहता हूँ अनुभूति जी को, जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारे महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक का भी धन्यवाद कहता हूँ। और हम वाकई में तहे दिल से आभारी हैं वो कि युवा पीढ़ी के साथ एक संवाद किया और बहुत सारी बातें ऐसी उन्होंने कही, बहुत समग्रता से पूरी पत्रकारिता का परिदृश्य जो है उसके ऊपर चर्चा की। और आप लोगों के सवालों ने जो कुछ वो नहीं कह पा रहे थे उनको भी वहाँ पर ले आए और बहुत सारी नई बातें भी आई। बहुत सारे लोग आप में से अभी अपने सवालों के साथ यहाँ पर बैठे हैं। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है कि भूख पूरी नहीं हो जानी चाहिए, तो आप लोगों की भूख बची हुई है, ये एक सकारात्मक पहलू है। आने वाले दिनों में आप चौबे जी भी हमारे साथ होंगे और दूसरे पत्रकार होंगे, आप उन लोगों से सवाल पूछेंगे और अपनी क्षुधा को शांत करेंगे। मैं सभी आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह से इसमें भागीदारी की। धन्यवाद।